अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार्स विदेश के। इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसे सेटअप से करवाते हैं जो कि डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के साथ मुंसलिक हैं और उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और इंटरव्यू सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। सो आपसे यही रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि मज़ीद पेरेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन जा सके। सो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज के सेशन में हमें ज्वाइन किया है उस्मान शेख साहब ने, जो कि फाउंडर हैं जमजम ऑटिज्म सेंटर के। आइए इनसे मिलते हैं और इनके बारे में जानते हैं और जमजम ऑटिज्म सेंटर इस्लामाबाद के बारे में जानते हैं तफसील से इन्हीं की ज़ुबानी। सो थैंक यू वेरी मच मिस्टर उस्मान कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला एंड वेलकम टू आवर चैनल। जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं कोशिश करूँगा पहले से सबसे माफ़ी के तौर पे कि जितनी ज़्यादा उर्दू में गुफ्तगू कर सकूँ बेहतर है। स्मॉल करेक्शन हियर कि आई एम सिटिंग हियर इन न्यूयॉर्क। यस, आई एम बीइंग अ फाउंडर ऑफ ए सेंटर इन इस्लामाबाद जिसका नाम ज़मज़म ऑटिज़्म सेंटर। और ये एक एडोलेसेंट के लिए शुरू किया गया था, एडोलेसेंट ग्रुप के लिए एज़ अपोज्ड टू अर्ली इंटरवेंशन। नाउ एक्चुअली वी डू कवर द एंटायर एज चेन, but yes, thank you so much for inviting me. Or inshallah, hopefully, it will be a very productive and learning session for me as well, and of course, जितने भी participants सुन रहे हैं। Thank you. ओके, राइट। तो सबसे पहले उस्मान साहब हम यही जानना चाहेंगे कि एक तो हमें ये बताइए कि ये इस्लामाबाद में कहाँ पर आप लोग मौजूद हैं, जमजम ऑटिज्म सेंटर, और दूसरा आपने कब शुरू किया और यहाँ पे क्या सर्विसेज दे रहे हैं आप लोग? जी, तो we are like most of the centers in Islamabad, we are situated in E11 2. E11 के अंदर एक है like a semi-regular facility है। तो I think many जो educational institutes हैं, especially special needs के, वो E11 सेक्टर में ज़्यादातर उनकी presence है। हमारी of course conversations हुई हैं CDS के साथ over the years in terms of के if they can allow us to move elsewhere in Islamabad, and I think they've been very receptive, I must say that. So that's one thing. In terms of जैसे मैंने बोला services का इसका कुछ background भी है, but I think we started at so we started 5.5 years ago, strictly around adolescent autism. और उसकी नीड इसलिए महसूस की थी कि मेरा अपना कुछ background ये है, of course there's always an emotional background to all of these narratives. So उसमें ये था कि मेरा जो बड़ा लड़का है, he has autism, he's 21 now, और मुझे बीच में मौका मिला था to spend a few years in Dubai. So he was with us there when we moved there. He was 10, और फिर वो जब हम 10 से 15 वो जो एज थी उसकी 5 साल दुबई में थे. So as he went through hormonal changes और behavioral उसका profile change हुआ, so we thought कि let's go back to the US. So I think that was the point when I realized कि जिस अगर मैं अपने बच्चे के लिए दुबई छोड़ के अमेरिका जा सकता हूँ तो अपने बच्चे और भी हैं जहाँ से मैं आया हूँ, इस्लामाबाद से, so पाकिस्तान से for that matter. So so there was a center in Islamabad, early intervention. We participated in its inception a couple of years prior to that, but that was strictly on early intervention. So when unki founder se baat hui thi, and she was also, I think Pakistan mein hai, you will see like, and I'll be very blunt, so Pakistan mein hai ye phenomenon कि you start your own thing and it's your own quote unquote shop. You do a lot of impact, of course. So I had a great conversation with her, and she said, you know what, early intervention के center Islamabad, Pakistan, कराची, लाहौर वगैरह में हैं काफ़ी, लेकिन जो adolescent का ना कोई नहीं, क्योंकि छोटे बच्चों को by virtue of the fact कि most of the providers are women, इस बड़ा मुश्किल होता है कि teenagers और early adults, उनको कैसे हम मैनेज करें. तो अगर इसमें कुछ करना चाहते हो करो. So I said, of course, क्योंकि मेरा बच्चा भी उस चीज़ से गुजर रहा था. So we started that. I think my understanding was the first such center dedicated solely for adolescent in autism space in Pakistan back then. We learned a lot. We take care of. I think the model that I tried to bring in was a little different from that I've seen elsewhere in the world, for that matter. But I learned from another center in Dubai and also from the US that we built it around life skills and vocational skills. Right? So idea was कि अगर बच्चा आता है 10-12 की एज में और उसको of course उसके early intervention पहले mostly you have ABA driven initiatives जहाँ पे एक बच्चा
डेवलप का होता है किसी और सेंटर में या किसी और एनवायरनमेंट में, but when he comes on board we continue those pieces of the puzzle, like I'm talking about speech and academics and OT and what have you, but I think the focus starts turning in another direction कि यार इस बच्चे को independent कैसे बनाना है as he or she goes through adolescent age and then becomes an adult. So उसमें करने के लिए फिर लाइफ स्किल से मरा पर्सनल ग्रूमिंग होगी. कई बच्चे होते हैं जो कि टॉयलेट ट्रेन नहीं होते. Being a parent, I think I've no shame in saying, we parents never got a manual जब ये बच्चे हमारी जिंदगी में आते हैं, how to actually work with them. So we actually also learn. And yeah, I think but we do have the ability. I must say, जो भी parents सुन रहे हैं, कोई reason है अल्लाह ताला ने हमें ये बच्चे दिए, क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि we have that ability. I think जहाँ पे हमने as parents काम करना है, वो willingness पे काम करना है. Are we willing to actually work with these children? Actually try to understand with them. And let me be very frank, कई दफ़ा communications के of course 100% of time issues होते हैं, और कई दफ़ा हमें लगता है यार ये बच्चे हमारी बात नहीं समझ पा रहे. But I'll tell you very frankly, I think बच्चे भी समझ रहे होंगे कि ये माँ बाप हमारी बात क्यों नहीं समझ पा रहे. I think there is that disconnect. But I think we all learning together. So हमने ये लाइफ स्किल पे काम शुरू किया very in a very dedicated manner, right? So चाहे अब टॉयलेट ट्रेनिंग हो रही है, पर्सनल ग्रूमिंग की बात की, सेल्फ केयर की बात हो रही है, सेफ्टी की बात हो रही है, बच्चों को बाहर कैसे लेके जाना. For instance, there are two other emotional undertones that are going through in a parent's mind. शुरू में बच्चे होते हैं सुपर एक्साइटेड, हम बच्चों को नहीं, हम ओटी इतने घंटे कराएंगे, हम स्पीच इतने घंटे कराएंगे, हम एकेडमिक्स ये कराएंगे. बस उनको होता है कि जी नहीं, बच्चा जो मोस्ट बेसिक रॉ इमोशनल नीड होती है ना पेरेंट की, होती है कि बच्चा जो नहीं हमारा नाम लेना शुरू कर दे, और जो नहीं है एबीसी बोलना शुरू कर दे, और थोड़ा जो नहीं है कायदा वगैरह पढ़ना सीखना शुरू कर दे, और इसको जो नहीं है मैथ आने शुरू हो जाए. जस्ट लाइक क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि न्यूरोटिपिकल बच्चा की तरह जितना हो सके उतना बेहतर. I think as more often than not, as these children get into, teenage years, हम parents ने थक जाते हैं, ये वाकई एक चीज़ different है. नंबर एक. नंबर दो, एक और भी realization certain होने शुरू हो जाती है, वो ये कि यार इसका never ending thing, and this thing will outlast our own lives. Okay, that's a very very poignant thought. तो उसमें तो I think that's the reason why I started this thing. How can we actually nurture these children, and I think how do we actually make them independent. और जब बच्चे बड़े भी होते हैं, हम अपने बाकी न्यूरोटिपिकल बच्चों के लिए क्या चाहते हैं, यार ये बच्चा जो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए. फिल्मी डायलॉग है, लेकिन ये कि वो पैरों पे खड़ा होने से क्या मराद है कि बच्चे की नौकरी लग जाए और शादी हो जाए. ओके, सो हमारे इस केस में तो ऐसा मुमकिन नहीं है, कम से कम उस कॉन्टेक्स्ट में. However, and that's where the vocational piece kicks in. The point ये है कि जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे, so we don't want these children to be even quote unquote जैसे हमारे उर्दू में कहते हैं बोझ ना बने, सोसाइटी तो दूर की बात है, अपने बाकी बहन भाइयों पे भी ना बने. So we'll provide that kind of an ability to these children. और उसमें ये है कि यार ये अपना ख्याल रख सकें और इंडिपेंडेंट हो सकें. अपने ख्याल से क्या मुराद है, अपने जिस्म का ख्याल रख सकें, कपड़े कैसे पहनने हैं, अपने सफाई का कैसे ख्याल रखना है, किसी और से फंक्शनली कैसे कम्युनिकेट करना है. एक दुकान में जाना तो वी डोंट वांट दैट. बच्चों को ये कोई पहाड़ा नहीं आना चाहिए कि 11 ज़रबे 25 क्या होता है, लेकिन ये आना चाहिए मैं कोई पानी की बोतल लेने गया हूँ या कोई ब्रेड लेने गया हूँ तो उसके इतना खर्चा, मेरे पास 100 रुपए हैं तो चलो 50 दिए तो शायद 25 वापस आने चाहिए. That kind of functional communication has to be there. I think that's very important. One, that's the piece on the life skill side, and on the vocational side was that they should have an opportunity to feel productive. The most important thing, irrespective of के आप कितने न्यूरोडिवर्स हैं, स्पेक्ट्रम में कहाँ बैठे हुए हैं, न्यूरोटिपिकल बच्चा भी हो या ना भी हो, everybody needs to feel productive. I think ये पाकिस्तान का भी केस है कि किसी तरह, as I said, I'll be very candid here, कि we need to provide opportunities for across all sections of society कि they need to feel productive. और productive ये नहीं कितने पैसे कमाना है, वो एक ही measure है. Productive ये कि मैं जब सुबह उठता हूँ, there is a reason for me to wake up. I need to go somewhere or do something. Either वहाँ जहाँ बैठा भी हूँ. So I think that activity level लाना जो इन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है from a behavior modification के लिहाज से भी. अगर ये बच्चे अपने आप को इमोशनली रेगुलेट नहीं कर सकेंगे, फिजिकली रेगुलेट नहीं कर सकेंगे, then they will become problem for themselves and people around. So I think this combination of whether it's medication, making sure they have the life skills, make sure they have vocational skills, and of course by that time or in parallel to that, we work on their communication skills, functional academics part of it,
and occupational physical therapy part of it. So I think they become as independent as possible. Upon graduation from our center, we can say, you know what, he or she is ready to be a functional part of the society, and society does not try to avoid them. At least gets mature to a point where they can start accepting these children, and even beyond that would be कि उनको integrate करें अपने साथ. Even in the US where I'm sitting, यहाँ पे भी society कम से कम इस level पे आई है सिर्फ कि we accept them anywhere. और आप देखेंगे airports में हो या bathrooms में हो या कहीं भी public spaces में हो, इन बच्चों को उनकी space दी जाती है, recognize किया जाता है, किया जाता है. But I think when it comes to about integrating them, इवन यहाँ पे भी अब अर्ली शुरू हो रहा है बात कि हम ये कोटा रखे जा रहे हैं. इवन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी हम न्यूरो डिवर्स लोगों को कैसे लेकर आएंगे, कॉलेजेस में भी. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट आईवी लीग स्कूल्स है कि यार जहाँ पे कुछ ना नामुमकिन है बहुत सारे बच्चों के लिए, लेकिन इन बच्चों के लिए जगह रखी जा रही है. सो आई थिंक वो जो पॉइंट है ना जहाँ से आपने इनिशिएटिव शुरू किया कि हाउ डू वी ब्रिंग all these participants of an ecosystem come together. And that's something that we also do as ZamZam Autism. We do not consider all other participants in the industry, if I may say that, as competitors, but as actually facilitator or collaborate करने के लिए जो भी है. So I think वो बड़ा important चीज़ है. Yes, I'm sorry, आपका question कुछ और था. मैं नहीं, काफ़ी हमारे आगे क्वेश्चंस काफ़ी हमें डिटेल से ये पता लग गया कि ZamZam ऑटिज्म सेंटर किस चीज़ पे काम कर रहा है. ये पेरेंट्स के लिए भी ऑब्वियसली हेल्पफुल होगा समझने के लिए कि उनको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग. एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके सेंटर का नाम है ZamZam ऑटिज्म सेंटर, तो कुछ ऐसी चैलेंजेस हैं जो कि वेरी क्लोजली रिलेटेड हैं, चाहे वो स्पीच के हों, लर्निंग इश्यूज हों. तो मैं पेरेंट्स की फर्दर क्लैरिटी के लिए पूछना चाहूँगा कि ZamZam ऑटिज्म सेंटर क्या सिर्फ ऑटिज्म पे ही काम करता है या एसोसिएटेड और चैलेंजेस जो हैं उन पे भी काम हो रहा है? Yeah, so जो भी journey होता है ना, it's I'm a big believer in gradual. I also believe if you take a long-term approach, you actually create a lot more impact in the near term. So, and I also believe you've got to be your domain expert. You got to have a core competence. You have to create a vertical एक space में. You have to become the best of breed in that space before. You know, हमारे होते हैं कि 6 चीजें कर लो, किसी चीज़ के ना jack of all trades and master of none. I think I'm perfectly fine being saying jack of all trades but master of one at least, right? So we start with the master of one, which हमने adolescent autism based focus किया था. That said, we bring in children whether you're slow learner है या cerebral palsy का challenge है या ADHD का issues हैं. So all the other by and large adjacent space में जहाँ पे mental challenges हैं, जिसको हम neurodiversity कहते हैं, we do actually accept them. We do work with them. For instance, we're very proud of it कि हमने एक बच्चे के साथ काम किया तो was quite highly functional to the point that कि जहाँ पे हमने dedicated एक resource उसको provide किया था so that actually वो बच्चा बैठा था metric exam में, federal board. उनके father के भी बड़ा was a push, and he works in civil bureaucracy in Pakistan, and he made sure कि उनका बच्चा जो नहीं passes this thing, and that child did, and now that child actually has gone to a quote unquote regular school. So that's a huge achievement, right? So and that's a very 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 important point that हम सबको कहते हैं हर इंसान यूनिक होता है, but ये जो बच्चे हैं ना, they have the what we call personalization has to kick in for them. There's जो बना भी है IEP जैसे कहते हैं, individualized education plan, कि हर बच्चे की अपनी needs हैं और फिर वो needs भी change होती हैं. So you cannot just lump all of them together कि यार ये जो बच्चा है ना इसको बस वही program दो या उसको जो नहीं वही therapy दो या उतने hours की therapy दो. Yeah, there are a lot of generalizations there. You get the big picture, right? But I think चाहे जो भी बच्चा हमारे पास आ रहा है different indications का, we actually assess that very properly, and there are 3 ways of doing it. And it kind of goes into your question कि एक तो ये कि हम ज़ाहिर पेरेंट का इंटरव्यू लेते हैं, राइट, कि उनकी अपनी क्या असेसमेंट है बच्चे की. उनको वो देखें किसी भी जगह बच्चा चला जाए ना, कितना 6-8 घंटे रहेगा, बाकी जो 24 घंटे में टाइम वो ज़ाहिर माँ बाप के साथ है. माँ बाप विल एक्चुअली टेल अस कि बच्चे की चैलेंजेस क्या है और वो उनकी एम्बिशंस क्या, उनकी गोल्स क्या है बच्चे के. नंबर 1. नंबर 2 कि we look at the previous reports from जिस भी इंस्टीट्यूट से बच्चे आ रहे हैं कि वहाँ पे उसकी कैसे डॉक्यूमेंटेशन हुई थी, वहाँ पे उसके कैसे गोल्स डिटरमिन हुए थे, कैसे उसको डेटा कलेक्ट किया गया था, उसकी क्या प्रोग्रेस हुई थी या कहाँ पे नीड गैप्स हैं. And third thing is कि we actually observe the child at our center. उसमें ये नहीं है कि 2 दिन
ये हफ्ता, ये 2 हफ्ते नहीं. So by and large we say, take 2 to 4 weeks. Make sure the child rotates through different programs. बड़ा program तो एक ही होगा, लेकिन different therapies, जो हमारे so called smaller programs हैं. So like हर कोई जो नहीं है एक अपना data collect कर सके, and then we sit down as a team and say, this is where we think the child is, and tie it up with जब उसके goal बनाने. एक साल का बनता है, but the goal is always quarterly. I strongly believe there are only two kind of senses: common sense and sense of urgency. So I think sense of urgency only kicks in if we say, okay, these are my quarterly goals, and then we very relentlessly execute that. Right? So, and we are very neutral in terms of philosophy, in the sense our key thing is, it needs to be outcome driven. So what works. Like for instance, kei log hote hain wo just married to the concept of ABA. We are not. We have ABA too. We have play also, and now we bring in, and we'll be the first of its kind in Pakistan. Next महीने एक training शुरू कर रहे हैं for RDI, which is a relationship development protocol. So the point is we do like to stay open-minded, even experiment, even explore, discover, learn, and shape the development of a child. So to answer your question originally, कि क्या हर किसी बाकी elements पे भी हम लेके आते हैं? Yes, we have separate personalized assessments and programs for all these children. Yes. Okay. तो मैं नेक्स्ट ये पूछना चाहूँगा कि आप यूएसए में हैं इस वक्त, तो ZamZam Autism Center तो इस्लामाबाद में, so there must be a team of professionals who are running your setup. तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि डिफरेंट सब प्रोग्राम्स में काम कर रहे हैं, तो आपकी टीम के बारे में थोड़ा सा अगर हमें बताएं कि क्या क्या प्रोफेशनल्स हैं, और इस हवाले से भी कि जब बच्चे आपके पास आते हैं, कुछ बच्चे तो जिस तरह दूसरे सेंटर से आ रहे हैं उनके पास, या किसी और जगह से आ रहे हैं, प्रॉपरली डायग्नोज्ड हैं, कुछ असेसमेंट हुआ है प्रीवियसली, तो जिनका नहीं होता वो सर्विसेज भी कंप्लीट हॉलिस्टिक अप्रोच से आप लोग चलते हैं, असेसमेंट, डायग्नोसिस उसको प्रोवाइड की जाती है या उसके लिए रेफर किया जाता है, कैसे करते हैं? Great question. I think so. If I draw a model, let's say, for instance, किसी और ने platform शुरू किया in another space, let's say Shaukat Khan, right? So the idea was, how do we address a need at a mass scale, right? But by the same token, that cannot be just कि आपने एक चीज बना दी, आपने फीस इतनी ज़्यादा charge कर रहे हैं, and then only cater to a certain socioeconomic segment of the society. By and large, I think वो जो बच्चे हैं जो हायर सोशियो इकोनॉमिक सेगमेंट के, वो कहीं ना कहीं से पहले से अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स करके आ रहे थे. By the way, just so that I add that, अभी recently, only 3 or 4 months ago, we started our early intervention program. उसकी एक painful realization मेरे पास ये थी कि जब हमने start किया तो I thought we become like we can stitch this whole chain together. Like if we are creating a best of breed in adolescent space, तो जो अर्ली इंटरवेंशन के जो 4-5 छोटे-छोटे जगह बनी हुई हैं, maybe that will feed into this. Okay, at the end of the day, we all are part of the same ecosystem, and we should be working in a collaborative manner. Painful realization मेरे लिए थी कि ऐसा होता नहीं. तो मुझे शुरू में एक रिमार्क भी किसी ने दिया था कि तुम कर लो, जब ये बच्चे जो बाकी छोटी जगह हैं वो कभी आने आएंगे, वो कभी रेफर ही नहीं करेंगे. और ऐसा ही हुआ. So I think that I said, what, okay. We're doing a great job when it comes to, and I'm very, very, data driven. I want to make sure the outcomes are there before we add anything else. So now we've added early intervention. So that बच्चा जो theoretically speaking 3-4 साल का था हमारे पास, we take that journey all the way to 18-20, right? So we actually have a whole roadmap, a plan for that child, and that plan is dynamic, keeps changing. So to answer your question, हमारे पास जो teams हैं, we cover all the bases in terms of चाहे आप academics कर रहे हैं या OT कर रहे हैं या speech कर रहे हैं, early intervention में arts कर रहे हैं. And there's another thing that we started, and very proud of it in Islamabad. हम इन बच्चों को छुपा के नहीं रखते. Okay, we take them out in the society, we celebrate them. So to the point के अभी it's not a very healthy place, लेकिन बच्चों को McDonald's भी ले जाते हैं. ठीक है, तो ताकि they feel part of the society, and the society also actually sees them without any reservations. Islamabad ट्रैक होती है, वहाँ पे तुम ट्रैकिंग के भी ले जाते हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा कई दफ़ा, and then we take them to equine therapy, horse riding से कहते हैं, from their own. वो एक अच्छा प्रोग्राम शुरू किया.
from an expat, I think in UK, और वहाँ पे बच्चे जाते हैं twice a month. So I think ये बड़ा ज़रूरी है कि, and of course parks ले जाना, so you know walks and so on and so forth. So I think that's very important कि उनका ये पूरी जो सारी जो needs हैं, चाहे emotional needs हैं, physical needs हैं, और you know intellectual needs हैं, we cater to all of them. So उसके लिए programs बनाना, उसके लिए team establish करना, वो जो team members उनको continuous training करना. So we have this thing at our center कि अगर कोई भी therapist है, so bring on therapists, typically, you know, they come on board as junior therapists who didn't have any bachelor's complete here. We kind of twist their arm to make sure they continue and finish in their masters before they become senior therapists and team leaders. And then, you know, so we work on ability with them. Willingness unke andar khud honi chahiye. If we don't see the right attitude of coming there and really getting their hands dirty, sometimes even literally, because jab toilet training ho rahi hoti hai. So I think it's important that wo jo team is fully dedicated, वो एक यहाँ पे स्टिच टुगेदर. और मैं आई मस्ट सल्यूट देम. मैं अपनी खाली सेंटर की बात, थेरेपिस्ट की बात नहीं कर रहा, जितने भी थेरेपिस्ट काम करते हैं, प्रोवाइडर्स एज वी कॉल देम अक्रॉस द वर्ल्ड, उनके बच्चे नहीं, उसके बावजूद ये कर रहे हैं काम, एंड दे कैन मेक सेम और मोर अमाउंट ऑफ मनी डूइंग समथिंग एल्स. सो एक्चुअली इनको जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाना चाहिए, एंड थेरेपिस्ट जूनियर सीनियर जो भी स्पेस में. इट्स नॉट एन ईजी जॉब. बीइंग अ पेरेंट, आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट एन ईजी जॉब, राइट? सो और so therefore, you know, we're very sensitive कि किस किस्म के talent को लेके आना, talent को कैसे groom train करना, and we also encourage them for training कि जो भी training programs करना चाहते हैं, we pay half of that, make sure कि वो अपने अंदर invest करते रहें. जितना वो अपने अंदर invest करेंगे, ला महला उसका फायदा बच्चों को होगा ही होगा, and जिसका side benefit center को होगा कि center के जो नहीं है capability बढ़ती रहेगी. So yeah, right. So that's what we try to do. So, but there's a little bit. But the point was, I was trying to say is कि यार एक, you know, one size fits all वाला चक्कर नहीं है. एक बच्चा आया जो उसके साथ 3.5 साल की उम्र में करना, वो 13.5 में नहीं करना. ठीक है. उसके दौरान भी कई दफा चीजें चेंज होती रहती हैं, वो नीड्स भी बदलती रहती हैं. So we take a holistic outlook, but then be very focused on day in and out, and in a quarterly timeline. Okay, where you want to be from point A to B before we even think of how to get to point Z, right? So. राइट. अच्छा, एक चीज और बताइए कि हाउ ओपन और ट्रांसपेरेंट ZamZam सेंटर इज रिगार्डिंग पेरेंट्स के हवाले से, क्योंकि पेरेंट्स एक चीज ये भी चाहते हैं कि ऑब्जर्वेशन वो देख सकें, कुछ उनको गाइडेंस ट्रेनिंग मिल सके, सो दैट जो रेस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली जो वो घर पे गुजार रहे होते हैं, तो पेरेंट्स उनको फैसिलिटेट कर सकें, ऐड ऑन कर सकें जो सेशंस, जो काम आपके सेंटर पे हो रहा है. और तो कितने ट्रांसपेरेंट हैं ZamZam सेंटर पेरेंट्स की इन रिक्वायरमेंट्स को लेके? इसके मैं दो जवाब देता हूँ. They kind of they go together. One was कि जी जब हमने स्टार्ट किया तो there was another center, I think basis नाम है उसका, और उनकी जो फाउंडर हैं उन्होंने एक्चुअली आके हमारे सेटअप में शुरू में ट्रेन भी किया था टीम को. She actually helped us a lot in terms of recruiting the early therapist. और and she was I think involved with another center elsewhere in the world. So plus यहाँ पे भी अमेरिका के अंदर भी और plus दुबई भी मैं ये सीखा था, it's very important of transparency. And transparency has two, you know, effects, intended effects. One was कि यार कि पता हो कि बच्चे अपने आप को, you know, protection is a huge thing. So we want to make sure कि बच्चों के साथ किसी भी किस्म का कोई mishap ना हो. So we probably the first one alongside basis जिन्होंने कैमरास लगाए हर कमरे में, to the point कि bathrooms में भी है, except one bathroom जहाँ पे ये थेरेपिस्ट जाते हैं. बाकी इस रूल है. अब हमारे पास 13 थे, अब 17 हो गए कैमरास एक इंस्टीट्यूट में. वो लाइव चल रही है कंटिन्यूस, और एक बंदा उसको देख सकता है एनी टाइम. ऑफ कोर्स वी वांट टू मेक श्योर इट गेट्स रिव्यूड रैंडम बेसिस पे. 1 2 ये चीज हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे भी है, जो यू नो रूम है जहाँ पे लोग सब आते हैं. शुरू में पेरेंट्स बैठ सकते हैं while they're waiting for the children कि जब उनकी थेरेपीज खत्म हो तो वो जा सकें, so they can actually observe the sessions. Third, कई पेरेंट्स कहते हैं कि हमें शुरू में जब बच्चे के एडजस्टमेंट के टाइम पे हमें भी बैठने दिया जाए, देखें कि बच्चे के साथ कैसे काम हो रहा है, या कि कई दफ़ा के बिहेवियर स्पाइक आती है, वो दे वांट टू सी कि एग्जैक्टली कैसे हम ट्रीट कर रहे हैं, तो दे वांट टू सिट एंड ऑब्जर्व. वी आल्सो अरेंज दैट. So it's an absolutely open door, it's an absolutely transparent across the board कि हम कैसे काम करें बच्चों के साथ. However,
it's you know, two sides of the coin. So what I do is I want to make sure that ये जो parents के लिए जो हम ये कर रहे हैं ताकि parents को समझ आ सके हम क्या काम कर रहे हैं, to the point generalization हो सके ना, एक बच्चे के साथ हम क्या कमांड यूज करते हैं उसी लैंग्वेज में यूज करें. घर में उर्दू हो रही है, हम हमारे अंग्रेजी हो तो उससे तो बात नहीं बननी, बच्चा कंफ्यूज होगा क्या क्या चाह रहा हूँ. So I want to make sure exactly वही कमांड्स चल रही हैं, वही environment recreate हो रहा है घर में जो यहाँ पे होना चाहिए. And we learn a lot from parents. जैसे मैंने बोला 16 घंटे तो वो उनके पास होंगे ना. तो then we actually mandate कि जो parents हैं ना, they are part of the team. We force them. So the point जब एक parent teacher meeting होती है ना, it's not कि जी हम बैठ के महीने बाद उनके बता रहे हैं कि हमने आपके बच्चे के साथ ABCDE क्या किया है और क्या डेटा कर रहे हैं. हम कहते हैं कि आपका भी होमवर्क था. You also have to report to us in a way कि आपने एक पूरे महीने में बच्चे के साथ क्या काम किया, जो हमने आपको दिए थे, जो आपके सवाल थे, जो कंसर्न्स थे. अगर एक जैसे टॉयलेट ट्रेनिंग पे काम हो रहा है, हम ये कमांड यूज करते हैं, हम उसके बाद डेटा इस तरह कलेक्ट करते हैं, एक बच्चे को टॉयलेट पे कितनी देर बिठाना, कितनी दफ़ा बिठाना, कितनी दफ़ा फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी, और इंटरवल्स क्या है, और बाउल मूवमेंट्स कितनी दफ़ा आ रहे हैं, सो एंड सो फोर्थ. So we would like to see the same data from you, mother or your father, जो भी आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं. So I think it kind of forces and goes back to my original thinking कि learning curve is not a function of time. आप टाइम से नहीं सिखाते किसी को भी दुनिया में, ये वॉल्यूम से सिखाते, प्रैक्टिस से सिखाते हैं, बार बार करने से सिखाते हैं. सो अगर एक बच्चे के साथ हम एक किसी टास्क पे या टास्क नहीं, गोल पे 2 या 3 घंटे लगा रहे हैं एक दिन में, वो बाकी क्यों बर्बाद कर रहे हैं 20-22 घंटे. ठीक है, उसमें सोना भी, बट आई थिंक दैट नीड्स टू गेट रेप्लिकेटेड, reproduced at home. So henceforth I think जब एक बच्चों को आप बार बार एक चीज सिखा रहे होंगे तो चांसेस है कि एज अपोज टू एक पेरेंट आके हमें कंप्लेन करे, या किसी को भी जो दुनिया में करते हैं, ये 6 महीने हो गए हमारे बच्चे में को बेहतरी नहीं आई, वो 6 महीने बेहतरी हमने अगर 6 महीने में लानी थी, अगर आप हमारे साथ टीम मेंबर हो, इक्वली फंक्शनल एंड रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, सो देन आई थिंक 6 के बजाय 3 महीने में आ जाएगी. तो आप बच्चे का फायदा होगा, बच्चे का फायदा होगा तो जितने भी उसके, मैंने इसको सर्कल ऑफ केयर कहता हूँ. सर्कल ऑफ केयर में एक बच्चे का एक हाथ पेरेंट्स के हाथ में और दूसरा हाथ हमारे हाथ. ठीक. सो आई थिंक तभी एक पूरे जो नहीं, जैसे आपने होलिस्टिक का वर्ड यूज किया था, 360 जो नहीं, एक बच्चे की इर्द गिर्द चीज बनती है ताकि वो लर्निंग कर्व से जल्दी थ्रू वॉल्यूम ग्रो कर सके. राइट. अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जो पेरेंट्स काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं जानने में, और राइटली सो, कि हाउ एक्सपेंसिव ZamZam सेंटर सर्विसेज विल बी फॉर देम. ग्रेट क्वेश्चन. जैसे मैंने बताया, सो इट्स मैंने आई थिंक आई डिडंट फ्रेज इट करेक्टली इनिशियली कि इट्स एक्चुअली ए फलाही इदारा है. ठीक है, इट्स अ नॉट फॉर प्रॉफिट. It's not a shop where we're trying to make money. I don't do this thing to make money. And we very proudly said that out of these 5.5 years, we have lost money in 5 years. So we proudly say that, so because it's a learning curve for me also. We try to make sure it acts and participates in that industry like any other commercial player, but not to make money, but to be self-sustaining. But that said, yes, हमारी ये नहीं है कि द फाउंडर एंड आई एम अ फाउंडर ओनली, सो कि जी किसी तरीके से हमने सो कॉल्ड दुकान से पैसे कमाए, ऐसा कुछ चक्कर नहीं. सो आई एम डूइंग इट बिकॉज ऑफ प्योरली इमोशनल रीजंस. आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स आई विल बी एबल टू टेक टू माय ग्रेव एक्सेप्ट दिस, so which I could be proud of. So that said, it's very, very important that any kind of platform has to be self-sustaining, and that means financially speaking it should be at a point जहाँ पे अपने आप को सस्टेन कर सके. हमने अभी तक इसको फंड इंटरनली किया, यानी कि हमारी फैमिली ने किया. We have not raised any money from outside, even domestically in Pakistan or internationally across the globe. A point is coming where I will do that because I can see कि एक बच्चा अगर 3 से 20 साल तक का हम उसको केटर सही तरह कर सकते हैं, और उसके, और आई एम लुकिंग एज अ थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव, राइट, क्योंकि उसको सही तरह उसके साथ हम फेयरली उसकी ग्रोथ में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट के तौर पे रोल प्ले कर सकते हैं through evidence. Then I say, what, okay, let's scale it. You can have the same kind of centers across the country, not in Karachi, Lahore. मुझे तो फर्क नहीं पड़ता ना, मैं तो वहाँ हूँ, मैं तो इस्लामाबाद में भी नहीं. I'd rather go to second tier cities, चाहे वो सियालकोट है, सरगोदा है, रहीम यार खान है, मुल्तान है, हैदराबाद है, बन्नू है, कोहाट है, नौशहरा है, क्वेटा भी, and then this is of course a lot of other places, but the point is I'd rather go there, and I can't wait to go there because वहाँ पे भी बच्चे हैं, right? और प्रॉब्लम इसमें है कि अभी भी ये it's not so easily
ये जो skills जो transfer कर रहे हैं जो development के लिए, वो online we have not figured out, and I'm talking about the industry across the globe, कि जो online basis पे ये चीज़ कर सके, we still need physical presence. So I think I'd rather go there. And then of course ये जो major जो platform जो urban centers in Pakistan में, I want to have a holistic one integrated platform जहाँ पे एक बच्चा जो नहीं है 3 से आ रहा और सिर्फ ये नहीं कि वो 20-22 तक है, और सिर्फ ये नहीं कि वो सिंगल थेरेपी लेने आ रहा है, हाफ डे प्रोग्राम कर रहा है, फुल डे प्रोग्राम कर रहा है, वो हॉर्स राइडिंग कर रहा है, वो स्विमिंग कर रहा है, वो we can have a vocational piece embedded in there. Like we have a very definitive goal. Hopefully by the end of this year we have our own bakery where these children actually work, and the bakery should be self-sustaining. So like वहाँ पे एक काम कर रहे हैं. We have computer labs. We want to work through that too, and we will also try to place these children in terms of being productive in different setups in Pakistan जहाँ पे वो काम कर सकते हैं. और residential piece. मैंने बोला था कि these children will outlast us, of course. So I want to make sure कि वो independent तो हों, लेकिन वो फिर बोझ ना बने. एक और फिल्म में डाला है. So society अपने बहन भाइयों पे भी, तो इनके लिए there has to be a space where they can actually live with dignity. Right? And it's very, very important to me. It's very close and near dear to all the parents, not just to my heart. So I think वो चीजें we can probably start doing that. So the idea is to have a two-tier system, have a more holistic platforms in urban centers, and then these satellite programs across the second tier and even rural areas of Pakistan. And it's not just Pakistan. The ambition is to be in the entire region. So right. I don't know what your question was, but hopefully I've answered that somewhere in there. Yeah. हमारी नेक तमन्नाएं और वेल विशेस और दुआएं आप लोगों के साथ हैं कि इस तरह के सेंटर्स और जगहों पे ही खुलें, क्योंकि जैसे भी कहा जाए पाकिस्तान में अभी भी ये जो मेन सिटीज़ हैं उन्हीं में ही हैं ये फैसिलिटीज़. बाकी जगहों पे बहुत ही शाज़ो नादिर ही हमें कोई प्रोफेशनल भी मिलता है. एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा, देन विल वाइंड अप दिस बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. और वो ये कि आप खुद भी पेरेंट हैं, प्रोफेशनली इन चीज़ों को देख भी रहे हैं, तो पेरेंट्स को क्या मशवरा देंगे आप जब वो किसी सेंटर, किसी प्रोफेशनल का इंतखाब कर रहे हों, सिलेक्ट कर रहे हों, किन चीज़ों का उनको ख्याल रखना चाहिए? Okay, so I think your question is a very good question. पहली बात है कि if you have a luxury of choice, that question becomes relevant. लेकिन अगर आपके पास इतनी ज़्यादा choices नहीं है, so you naturally will be drawn to something कि यार ये एक center है या एक आदमी है, यानी therapist है जो कि चीज़ services provide कर सकता है. Let me try it out. And you are going to try it out. But as I said to all the parents initially, मैं यहाँ पे एक और भी message add में देना चाहता हूँ. लेकिन जहाँ तक पेरेंट्स का ताल्लुक है कि यार पहली बात तो ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट stay real. I think we have some ethos, some in our center that speaks to our culture. Like for instance, we say do bold things at speed, and then we say outlearn and outwork. We also say design your time. So be very careful how you want to design the development plan of your children, these children, right? इसमें 2-3 मोटी चीजें याद रखें. Number 1 ये कि you keep dreaming, but stay real. Okay, if your ambition is that by the time I pass away to another, to my next phase of my life, I want to make sure कि बच्चे independent हो सकें. उसके and be very realistic. अच्छा इसको क्या needs हैं, needs कैसे change होती रहेंगी, उसके साथ मैंने क्या काम करना है. आप अपने बाकी neurotypical बच्चों के लिए तो करते ही है ना वो, लेकिन वहाँ path set हुआ है कि एक बच्चे को नर्सरी में डाला, पे उसने स्कूल में गया, मेडिकल स्कूल में गया, उसकी नौकरी लगी, शादी हो. यहाँ पे you have to have a slightly different path, and you have to retrain your mind what my expectations are for this child, right? That's very critical. Okay, ये expectation हम लोग गलत रखते हैं, वो जो disconnect होता है ना, फिर हम blame करते हैं ये centers को या therapist को. ऐसा नहीं होना चाहिए. Number 2, you are equal, if not more responsible and accountable in your child's development plan. Then these centers or therapists. After time गुजारते हैं, you have to participate, you have to have the willingness. Willingness comes to अपने अंदर खुद आएगी. देखिए अल्लाह ताला ने भी बोला है कि जब तक ability का ताल्लुक है ना, मैंने ability तुम लोगों को दी है. Trust me, अगर मैं कोई googly फेंकता हूँ तुम्हारी तरफ, I know you can play that googly. But willingness तुमने लानी है, और तुम willingness लाओगे तो I'll become a partner with you. लेकिन अगर willingness नहीं लाओगे, I will not become a partner with you. अल्लाह ताला बोला I help those who help themselves first. तो willingness पेरेंट्स को लानी बड़ी जरूरी. थर्ड ये कि
from a parent's perspective, you know, besides staying real, try to work with other parents too in the same space. You know, don't be shy of it. Don't be embarrassed by your child in any way, shape. Be absolutely proud. मैं बगैर किसी झिझक के बोल रहा हूँ कि मैंने ये एक और फिल्म में डाला होगा कि यार ये मेरे लिए पर्सनली स्पीकिंग मेरा बच्चा एक जन्नत का टिकट है, उसके अलावा मुझे कोई टिकट नहीं आज तक. सो देयर इज नो कि मैं ये टिकट लूज करूंगा. व्हाई वुड आई लूज इट? और तो किसी चीज पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो चीज पास हो सके उस दिन डे ऑफ जजमेंट पर, लेकिन ये पे कोई चांस बनता है. तो इस चीज को प्राउडली लेके संभालें और उस पर काम करें. और अगर दो पेरेंट्स में खाली एक ही लीड करे इट्स परफेक्टली फाइन. पुश ना करें यार कि मेरा हस्बैंड क्यों नहीं कर रहा या ये कि मेरी वाइफ क्यों नहीं कर रही. इट्स परफेक्टली फाइन. तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. सो एंड यस बिकम एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, सिट विद द टीम, यू आर पार्ट ऑफ द टीम, यू हैव योर इनपुट and you work with the team कि अपने बच्चे की बेहतरी के लिए. Right. Yeah, that's the answer to your question. If I have one more minute, I would like to add something for all the other centers in Pakistan, if they also yeah, sure. If it is it computes in 1 minute, yes, you can go. 1 minute. I understand. I take it. आप edit कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं. वो ये है कि what I'm also trying to do, because हमारी positioning is very, not for profit. It's very, very important कि जो industry है ना, it becomes an ecosystem जहाँ पे it needs to be, this neurodivergent centric philosophy. यहाँ ये नहीं हो सकता कि हम 1.5 दिन की मस्जिदें बनाएं और सुबह नहीं है अपनी अजानें देते रहें. It's not gonna work out like that. आपने कंसोलिडेट न करें बेशक, लेकिन आप एक दूसरे से कोलैबोरेट करना शुरू करें खुदा के लिए. और इट्स नॉट जस्ट द फंक्शन ऑफ कि वॉक्स पे आ गए. वॉक्स पे भी इकट्ठे नहीं आते, लेकिन यह कि कम से कम जो आप जो सीख रहे हैं, जो लर्निंग आपकी है, शेयर दैट विद अदर्स. इकोसिस्टम जहाँ के, और अगर बच्चे की बेहतरी होगी तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका सेंटर बेहतर ना हो. अब जैसे मैंने बताया था कि अर्ली इंटरवेंशन है और फिर एडोलेसेंट है और फिर ऑफ कोर्स द अदर पीसेस टू द पजल टू. ये जो हर कोई अपने तरीके से काम करें, साथ मिलकर काम करें, actually end up increasing the size of the market, if I can use that word, and will financially help you to your other centers. Start working with others, and we are doing that. Thankfully, we have a vision. We have architected that. We want to become a bridge for bringing all these participants together. And I think the catalyst needs to be, once again, willingness on part of these centers. Let's start working together. And if there's a difference of opinion, that's perfectly fine. But I think there's a lot of room for collaboration there. And then I think we must do that, both from a research standpoint, from training standpoint, and from a clinical experience standpoint. Right. So this was the message जी उस्मान साहब की तरफ से, और I think very rightly pointed out कि collaboration की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. So उस्मान साहब, thank you very much once again कि आपने टाइम निकाला और ये इन्फॉर्मेशन जो आपने दी अपने सेंटर के बारे में, अपने ऑपरेशन के बारे में, कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं. आई थिंक ये सब लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी जो पेरेंट्स चाह रहे होते हैं ये इन्फॉर्मेशन. सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. नहीं, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया, एंड आई होप आई मूव द नीडल टू सम डिग्री. पेरेंट्स भी और जो सेंटर्स भी हैं सब अपनी तरफ से बेहतरीन ट्राई कर रहे हैं. It is a never ending thing. You're not going to see an immediate result, but I think we are doing the best that we can, all of us. ओके, सो थैंक यू वेरी मच जी. आप सबका भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे. अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़. शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़.